Okay, so we'll start with new chapter today, and that is nothing but current electricity. So we are moving one step ahead from electrostatics क्योंकि electrostatic में charges are at rest, and here we are talking about current electricity. इसका मतलब now we will be talking about moving charges because current कहाँ से आता है? Current is when you have moving charges. So now we will be talking about moving charges then. Yes, of course. जब चार्ज मूव होते हैं देन यू हैव मैग्नेटिक फील्ड्स, वो बाद में आएगा. यहाँ पे फिलहाल वी विल बी स्टडिंग थिंग्स रिलेटेड टू करंट. सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड्स एट ऑल. तो हमें यहाँ पे बात करनी है करंट क्या है, देन इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, लूप क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, देन व्हाट आर किरचॉफ्स लॉज, देन हाउ डू यू मेजर अननोन रेजिस्टेंसेस. तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है वो देखेंगे, मीटर ब्रिज देखेंगे, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर वो देखेंगे हम लोग, एंड हाउ डज ऑल दिस डिवाइसेस वर्क. सो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. फर्स्ट, व्हाट आर किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ के दो लॉ है, करंट लॉ एंड लूप लॉ, आई मीन वोल्टेज लॉ बेसिकली. देन वी विल अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स. हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज करके अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, एंड द अरेंजमेंट टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज. फिर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज मीटर ब्रिज. देन वी विल गो अहेड एंड सी व्हाट इज हाउ डज अ गैल्वेनोमीटर वर्क, राइट. टू स्टार्ट ऑफ विथ, सब स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, लेट अस से वी हैव अ कंडक्टर. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट इनसाइड अ कंडक्टर you have at room temperature, because when you say conductor हम लोग metals की बात कर रहे हैं, और metals में जो outer most shell मतलब valence shell के जो electrons होते हैं they are loosely bound, और at room temperature because they are receiving energy in the form of heat from the surrounding, वो जो loosely bound electrons होते हैं they become free to move. So you have free electrons which are available for conduction, right. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हेन आई से कंडक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट two types of charges here. One which are positive ions which are heavy and which cannot really move from one point to another point inside a conductor. ये जो मैं रेड सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ ये पॉजिटिव आयन्स है. Positive ions cannot move from one point to another point inside a conductor. They can just vibrate. They perform simple harmonic motion. They cannot go from one position to another position. Okay, so वो they can vibrate, right? Then let's say we have a electron, an electron. तो single electron की बात चल रही है यहाँ पे. So इस कंडक्टर को हमने अभी तक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी मतलब ईएमएफ हमने नहीं लगाया है. सो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस चार्ज, दिस इलेक्ट्रॉन will move, right, but it will move randomly. It doesn't have a specific direction of motion, right. It moves randomly, so it keeps on going randomly. Okay, अब then why don't we get current? That is a question. जब भी चार्ज मूव होगा वी से मूविंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट करंट. हम बोलते हैं ऐसा कि मूविंग चार्ज जो है वो करंट देता है हमको. बट इन दिस केस हमने बैटरी अप्लाई नहीं किया, हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है, फिर भी तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो करंट मिलना चाहिए, नहीं मिलता. हाउ डू वी नो? इट्स सिंपल, इट इज वेरी सिंपल थिंग. एक मेटल को उठा लो हाथ में,
विदाउट कनेक्टेड टू सर्किट, सर्किट से कनेक्ट नहीं किया, हमने मेटल को उठा लिया, वी डोंट फील दैट देयर इज करंट ना। मेजर भी कर लिया विद द हेल्प ऑफ एमीटर, यू डोंट feel or you don't see any current, but charges are moving, तो moving charges constitute current ऐसा बोलते हैं, but then in this case charge is moving but you don't have any current। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज किसी भी बल्क मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, राइट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई इलेक्ट्रॉन, लेट अस से मैं एक सेक्शन लेता हूं, आई विल टेक दिस सेक्शन, दिस इज अ सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस सेक्शन में लेफ्ट से राइट जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट भी जाएगा, है ना। सो ओवरऑल बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेट करंट इज जीरो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, राइट। तो ओवरऑल कैंसलेशन है, सो ओवरऑल देयर इज नो करंट if you don't have external EMF applied to it। By the way, ये एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि EMF क्या और पोटेंशियल डिफरेंस क्या, मतलब वोल्टेज क्या बेसिकली। You have to understand, for example, just for an example, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जब मैंने इसको एक बैटरी कनेक्ट कर दी विथ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज V, a current I flows through it, correct। तो across the ends of resistor, across the ends of resistor you say there's voltage or potential difference, but जब ये जो बैटरी आपने लगाई है, जब आप इसको इंटरनली देखोगे, व्हाट इज इंटरनल मीनिंग ऑफ इंटरनली, एनी बैटरी आप अगर घर में सेल भी लाते होंगे ना, तो ये जो सेल है, दिस इज वन सेल, ओके। इस सेल में एक होता है पॉजिटिव एंड, एक होता है नेगेटिव एंड। तो ये जो सेल है इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल, जो बैटरी है वो खुद कुछ मटेरियल से बना हुआ है, तो उस मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, राइट, करेक्ट। सो द बैटरी इटसेल्फ हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस। बैटरी का काम क्या है? टू सप्लाई चार्जेस। तो ऐसा मान लो कि चार्ज को बैटरी के अंदर से बाहर तक, टर्मिनल तक आना है, तो दैट चार्ज विल फेस रेजिस्टेंस, है ना। तो इंक्लूडिंग दैट इंटरनल रेजिस्टेंस आप बोलते हो दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। So that is a very slight difference between voltage and EMF। In voltage, you only talk about potential difference across the ends of external component, in this case is resistance। resistance के end पे कितना potential difference मिला, कितना voltage मिला, that is potential difference। कहाँ पे रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल कंपोनेंट था उसके एंड्स पे, अक्रॉस दैट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, राइट, राइट। बट बैटरी जो सप्लाई कर रहा है दैट इज ईएमएफ, तो उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करने के बाद जो बचा दैट इज वोल्टेज। सिंपल सा मीनिंग है इसका। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी सेल लगा रहे हैं, हम लोग सेल यूज करते हैं ना, वी यूज बैटरीज, राइट। तो बैटरी भी तो किसी मटेरियल से बना होता है। वो बैटरी कहाँ कनेक्ट करते हो? एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कनेक्ट करोगे, कैपेसिटर में कनेक्ट करोगे। तो कैपेसिटर या रेजिस्टेंस या सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मिला, दैट इज डिफरेंट। व्हाई डिफरेंट? स्लाइटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि बैटरी जो है, बैटरी में करंट जब बैटरी से चार्जेस जब सप्लाई होंगे, तो बैटरी जिस मटेरियल से बना है वो खुद भी उसको अपोज करेगा। इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। So including that internal resistance, whatever energy you have to drive a current is called as EMF, electromotive force। So in this particular chapter, normally instead of showing V, I will be showing E,
इसका मतलब we will be taking into consideration internal resistances when and where it is required. तो यही डिफरेंस है EMF में and potential. They have same dimensions, they have same units, right? Good. तो बेसिकली होता क्या है, when I connect a source of EMF to a conductor, पहले क्या था, पहले रैंडम मोशन था इलेक्ट्रॉन्स का, है ना? तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, रैंडम मोशन था. As soon as we connect a source of EMF, जैसे ही हमने EMF का सोर्स कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, so I will be denoting this by E. As soon as we connect this, electrons will start moving from negative terminal towards positive terminal, right? मतलब against the direction of electric field, क्योंकि electric field is always directed from positive to negative if I am not wrong. तो electrons start moving from negative to positive, right? मतलब charges have a specific direction now, right? Correct. And then you say that this conductor has current. By the way, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो होता है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो करंट हम लोग उल्टा दिखाते हैं. वी शो करंट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? So conventional current direction is always opposite to the direction of flow of electrons, right? These are some basic things that you must know. इतना आपको पता होना चाहिए, राइट? तो करंट कब होगा, जब आपके पास एक एक्सटर्नल एजेंट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब बैटरी लगाने की वजह से क्या हुआ, दैट द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside a conductor have specific direction of motion, and that is the starting point of current electricity because now you have current. Once you have current, तो अगले स्टेप पे आएंगे, फिर हम देखेंगे what happens at junction, तो जंक्शन क्या है वो भी डिफाइन करेंगे. what happens inside a loop, तो लूप क्या है वो भी डिफाइन करेंगे. so we will go into the basics in a while. For the time being, let us just note down जितना हमने किया है. so I'll just start with little bit of introduction because it is always required to give you a rough idea about what we are going to learn. So to start off with, it is important for us to have some kind of introduction to this chapter. Okay, so when we have a moving charge, when an electric charge is set into motion, okay, through a conductor, or I will better say when an electric charge moves, that is better, moves, क्योंकि मैंने बोला set in motion मतलब हम लोग उसको set कर रहे हैं, so that is not the case. Okay, in any way it means both ways. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डिफरेंस क्या है, विदाउट बैटरी मतलब क्या होता है और विथ बैटरी मतलब क्या होता है. So it's okay. So when an electric charge moves through a conductor, it constitutes an electric current, right? Then a conductor
contains large number of electrons, large number of free electrons, that is a correct word to use, free electrons which are in the state of random motion, right? So because of this state of random motion, net current through any section is zero. So the net charge basically crossing any cross section of the conductor is zero. Hence an electric current does not flow through the conductor, right? अब अगर हमने external source लगा दिया, then all these electrons will have a specific direction of motion and hence you have current basically. So however, when a source of EMF, मतलब battery basically, okay, when a source of EMF is connected to the conductor, and electric field is developed at every point inside the conductor. Electric field is developed at every point inside the conductor. Okay. Therefore, because electrons are negatively charged, so they will move against the direction of field. So hence therefore electrons being negatively charged travel in a direction opposite to the electric field. Opposite. Just a minute. Opposite to the electric field, and so the electric current flows. So the electric current flows through the conductor, through a conductor. Important ये है, the direction of conventional current is opposite to the flow of electrons. That is really important. ये पता होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन ही होता है. ये क्यों पता होना चाहिए? You will realize why I am saying this in सेमीकंडक्टर्स चैप्टर, क्योंकि वहां पे अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन और करंट, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट लिया जाता है, तो आपको बहुत सारे डिवाइसेस का वर्किंग नहीं समझेगा, राइट? सो इट ऑल, everything is important, you have to know this. So the direction of
electric current flow, electric current is conventionally opposite to the direction of electron flow. Right. This is sufficient as a part of introduction. इतना हमको पता होना चाहिए. If you know this much, then we can go ahead and start with the next topic, which makes the building block for this particular chapter, that is Kirchhoff's laws. So next we have to learn what are Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws. By the way, before going into detail of Kirchhoff's law, हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए. कॉन्सेप्ट मतलब दे आर जस्ट बेसिक डेफिनेशन. मतलब व्हाट इज अ जंक्शन. बाय द वे, तो अभी मैं आपको बता देता हूं एक एक करके. आपने बहुत बार सुना होगा, है ना? क्या सुना होगा? चालीसगांव जंक्शन है, मनमाड़ जंक्शन है, दिल्ली जंक्शन है. रेलवे के लिए बोल रहा हूं मैं. करेक्ट. बट आवर सिटी इज नॉट अ जंक्शन. व्हाट इज जंक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? अभी बहुत सारे चौक होते हैं, उसमें से हर चौक को जंक्शन नहीं बोला जाता, है ना? What is junction? A junction is a place where many roads meet basically. मतलब वहां पे बहुत सारे रास्ते आके मिलते हैं, है ना? तो in electrical circuits, basically junction is a point where current can split. उस पॉइंट से करंट या तो स्प्लिट हो सकता है या फिर करंट कमिंग फ्रॉम मेनी डायरेक्शन कैन मीट. तो मान सकते हो यहां से करंट आया I1, यहां से करंट आया I2, यहां से करंट गया I3, यहां से करंट गया I4. सो यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट. बट द आइडिया इज a junction is a point from where current can split or where currents coming from different branches can meet. Right? तो एनालॉजी है. जब हम रेलवे जंक्शन की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे डायरेक्शन से ट्रेन वहां पे आती है, राइट? इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं, है ना? हर एक रेलवे स्टेशन को जंक्शन नहीं बोला जाता. जैसे मैंने आपको बताया, आवर टाउन डजंट हैव अ जंक्शन. सो junction is any point from where current can split or currents coming from different direction can meet. तो पहला चीज ये पता होना चाहिए. Then you should know what is an electrical network. अब तक हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करते आए हैं. मतलब रेजिस्टेंस अगर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, है ना? इंडक्टर अभी आगे आएगा. तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मतलब क्या होता है? बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. मतलब उसमें हो सकता है कि कहीं पे रजिस्टर लगाया हो सकता है कहीं पे कैपेसिटर लगाया हो सकता है यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे कैपेसिटर हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ऐसा you can have a battery over here, right? तो ये कैपेसिटर C1, C2, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 और ये बैटरी होगी. हो सकता है एक से ज्यादा बैटरी हो, पॉसिबल है. तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट एलिमेंट्स. सर्किट एलिमेंट्स किसको बोलते हो?
resistor, capacitor, inductors, all these are called as circuit elements, right? So electrical network is a combination of various circuit elements and sources of EMF. Sources of EMF, it's not circuit element. Battery is not circuit element. Okay, EMF source is not circuit element. तो resistances, capacitances are called as circuit elements. तो उसका एक complicated combination उसको बोलते हैं electrical network. हो सकता है complicated नहीं भी हो, but just a combination of circuit elements and source of EMF is called as electrical network. मैंने बैटरी हटा दी तो it will not be called as electrical network. Okay, तो बैटरी source of EMF होना चाहिए. Then what is a loop? जंक्शन हो गया, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो गया. तो अभी पहले तो हम जंक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना इस डायग्राम में, दैट इज बेटर, समझने में इजी होगा. तो ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट, जहां पे 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में करंट जा सकता है या 3 डिफरेंट डायरेक्शन से करंट आ सकता है ना. जंक्शन हो गया. ये एक दूसरा पॉइंट है, ये भी जंक्शन है. अब दिस पॉइंट सी कैन नॉट बी कॉल्ड एज जंक्शन. राइट. So anyways, so we have identified junction मतलब क्या, right? अब the part of the network between two junctions is called as branch. मतलब ये एक branch हो गया, है ना? Part of the network that lies between two junctions is a branch. तो ये एक ब्रांच हो गया, ये दूसरा ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच है, ये तीसरा ब्रांच हो गया. तो ब्रांच 1, branch 2, branch 3, right? Just a minute. So these are branches. So what we have learned? Junction, electrical network, branch. क्या रह गया? लूप. लूप मतलब क्या? लूप का मतलब बहुत सिंपल होता है, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ. तो जब मैं ब्रांच की बात कर रहा था, मैंने बात की थी ए से लेके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये पॉइंट भी आ गया, राइट? ये एक ब्रांच था, राइट? बट ये क्लोज्ड नहीं है. क्लोज्ड नहीं मतलब क्या? यहाँ ए से बी के बीच में मैंने दिखाया कुछ नहीं. सो यू नीड टू हैव अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ. एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ in an electrical network is a loop. तो ये एक लूप हो गया. So this is one loop, this is second loop. क्योंकि जब तक आप क्लोज नहीं करते, क्लोज करना पड़ेगा. अभी जब आप मैं लूप की बात करते हैं तो लिखते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल आई गिव सम नेम, मैं इसको कुछ नाम देता हूँ. तो व्हेन आई एम मेंशनिंग ब्रांच, जब मैं ब्रांच की बात कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा ब्रांच ACDB. इसका मतलब बहुत सिंपल है. इसका मतलब आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दिस पार्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ACDB ब्रांच. क्लोज नहीं है, नीचे से ओपन है, राइट? तो लूप नहीं बोल सकते, उसको ब्रांच बोलेंगे. बट लेट अस से इफ आई राइट, मैंने ऐसा लिख दिया ACDB, ए आखिरी में, तो दैट बिकम्स अ लूप. मतलब ए से स्टार्ट हुए ए पे खत्म हो, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स आर सेम, राइट? तो उसको आप बोलते हो लूप, राइट? तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जंक्शन मतलब जब भी जंक्शन आया तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट करंट कैन स्प्लिट और मीट. और उसका हम लोग देखेंगे ही. पहला लॉ, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ इज जंक्शन लॉ. टोटल करंट एट जंक्शन इज जीरो. समेशन ऑफ ऑल द करंट्स कमिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इज जीरो. वो हम देखेंगे. देन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जब वर्ड यूज होगा, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, it can be a simple combination, it can be a complicated combination. Mostly complicated होता है.
So a combination of various circuit elements and source of EMF is called as electrical network. Then what is a branch? Branch is a part of electrical network between two junctions. Then what is a loop? Loop is closed conducting path inside an electrical network. That is a loop. तो ये सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो what I will do is one by one हम लिख लेते हैं because it is important for us to know. And then we'll start with Kirchhoff's law. क्योंकि Kirchhoff's law में ये हर एक वर्ड मेंशन होने वाला है. That's why we need to know. So I'll start with talking about what is a junction. As I told you, it is any point in the circuit where current can split. It is any point in an electrical circuit or in an electric circuit where current can split or currents coming from different directions can meet. या फिर सिंपल वे वेयर मेनी कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर. वो एक पॉइंट है जहां से अलग अलग कंडक्टर्स ज्वाइन किए हैं. वैसा भी ठीक है. It's okay to say it that way. So it is any point in an electric circuit where current can split or currents coming from different direction can meet. Then you need to know what is electric network. So it is a combination of various circuit elements, electric circuit elements, and by the way ये circuit elements है, इसको components भी बोलते हैं. And sources of EMF are connected in a complicated manner. Right. Then what else do we need to know? हमको पता होना चाहिए what is a loop and what is a branch. So what is a branch? As I told you, a branch is any part of the network that lies between two junctions. Okay, क्या रह गया? लूप. हमने लूप अभी तक डिफाइन नहीं किया. So let's define loop. Loop, it is easy. Any closed conducting path. Any closed conducting path in an electrical network
is called a loop और इसको एक नाम है mesh, इसको mesh भी बोलते हैं, right? So this is all that you need to know before starting Kirchhoff's laws, right? So now finally we can start with first Kirchhoff's law. So it is 9.2.1. Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, और एक किरचॉफ्स जो फर्स्ट लॉ है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ और इट इज आल्सो कॉल्ड एज जंक्शन लॉ, राइट? तो लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्टिकुलर लॉ. बहुत सिंपल सा लॉ है. लेट्स से लेट अस से हमारे पास ये एक जंक्शन पॉइंट है P. We have this P point is a junction, right? So as I told you earlier, junction पे क्या होता है? Current can come from many directions or can go in many directions. So I'm just drawing some random directions of current flow, right? Some random directions. Some random directions, okay? Up. What will happen is let us say यहाँ से current I1 is coming towards point P. Let's say I2 is going away from point P. Let's say I3 is coming towards point P. Let's say I4 is also coming towards point P. Let's say I5 is going away from point P. मैं randomly कुछ भी ले रहा हूँ. I am just taking random direction, right? तो what Kirchhoff's law tells us is the algebraic sum of electric currents at any junction is always equal to 0. Algebraic sum of all the currents at any junction is 0. मतलब total current at point P is 0. मतलब there is no net accumulation of charges at point P. Current आया गया, right? There is no net current at point P. मतलब there is no net charges at point P. लिखते कैसे हो mathematically? Summation of all the currents at any junction is 0. अब इसको algebraic sum बोलने के पीछे एक reason है. You know, I cannot write it like this. I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 equal to 0. नहीं चलेगा. तो इसके लिए हमको साइन कन्वेंशन बनाना पड़ता है. ये 0 कब होगा? आफ्टर यूजिंग साइन कन्वेंशंस. अभी साइन कन्वेंशन मतलब क्या? एक रूल है, सिंपल सा रूल है, और वो सिंपल सा रूल हमको ये बताता है जो भी करंट जंक्शन की तरफ आएगा that is positive. The current flowing towards the junction is positive and going away is negative. The thing is, अगर आपको फिजिक्स लॉन्ग टर्म तक याद रखना है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. ऑफ कोर्स सोचना है, बट बार बार पढ़ते रहना, याद रखने नहीं करना है.
तो उसको कहीं ना कहीं एक रियल लाइफ का टच देना पड़ेगा. हाउ डू आई रिमेंबर सच थिंग्स? इज सिंपल ना, सिंपल, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी. हमें कोई कुछ देने आया तो अच्छा लगता है, तो पॉजिटिव है. कोई मांगने आया तो बुरा लगता है, तो नेगेटिव है. दिस इज व्हाट आई इमेजिन. पॉइंट पी पे करंट आ रहा है, गुड. करंट आ रहा है, पॉजिटिव है ना. जा रहा है, नेगेटिव. कोई पैसा मांगने आया तो नेगेटिव ही लगता है, देने आया तो लाइक ओके, अच्छी बात है. सो दिस इज हाउ आई नॉर्मली डू थिंग्स. तो आई विल सजेस्ट यू कि आप खुद के ऐसे चीजें करो, लाइफ टाइम याद रहेगा आपको. सो एनी करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव बाय रूल, बाय कन्वेंशन, एंड करंट गोइंग अवे इज टेकन टू बी नेगेटिव. तो इसका मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैंने ड्रॉ किया है, I2 और I5 will be taken to be negative because they are going away, and all other I1, I3, I4 they are taken to be positive. अब आप लिख सकते हो अल्जेब्राइक सम. मतलब आप क्या लिखोगे? I1 minus I2 plus I3 plus I4 minus I5 equal to 0. मतलब I1 plus I3 plus I4 equal to I2 plus I5. मतलब the sum of currents, total current flowing towards the junction is equal to sum of currents, total current flowing away from junction. मतलब जितना करंट टूवर्ड्स जंक्शन आ रहा है इक्वल टू उतना ही करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, राइट. मतलब देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ चार्जेस एट द जंक्शन, जो मैंने आपको पहले ही बताया, right? So at junction there is no net accumulation or loss of charges, right? तो किरचॉफ्स लॉ को दो तरीके से बोल सकते हो. एक, द अलजेब्राइक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, या फिर द सम ऑफ ऑल द करंट्स flowing towards the junction is equal to sum of all the currents going away from the junction, right? Good. So we will just note down what we have learned. It is a very simple law. Summation of all the currents at a junction is zero. जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही वहां से जाएगा. सो नो नेट गेन और लॉस, राइट. और कन्वेंशन मैंने बताया. सो लेट्स नोट इट डाउन. Let me start with statement of the law. This law is simple. The algebraic sum of electric currents at any junction is always equal to 0, right? Mathematically you can write that is summation I equal to 0, right? Then we need to write about sign conventions. It's very important that you know what are sign conventions. So sign conventions. Then the current or currents basically flowing towards the junction are taken to be positive, and those flowing away from the junction are
taken to be negative, right? Therefore, what you can say is, therefore I1 I1 I3 and I4 are positive, and I2 and I4 are negative because they are going away. So I5, sorry, I2, I5 are negative, I1, I3, I4 are positive, right? And hence what we can write is, hence we have I1 plus I3 plus I4 minus I2 minus I5 equal to 0, and therefore what we have is, लिख देते हैं, doesn't matter. Therefore what we will have is I1 plus I4 I3 plus I4 equal to I2 plus I5, right? And what do we conclude from this? The conclusion is sum of currents flowing towards the junction is equal to sum of currents flowing away from junction. Thus, there is no net gain or loss of charge. Thus, the sum of currents flowing towards a junction is equal to the sum of currents flowing away from the junction, right? And this is in accordance with conservation of charge. So it actually is a proof of conservation of charge. So this law is in accordance with conservation of charge, right? Since there is no net, since there is no gain or loss of charge at the junction, right? So that's it. Easy है. There is nothing in this. बहुत easy है. So overall what we have done today is हमने आज से basics देखा, right? Basics is very basic, so I'm not going to go again into it. Then we saw what is Kirchhoff's law, और उससे पहले ने देखा what is junction, what is electrical network, what is branch, what is loop. Okay,
looking at time limitation, next law मैंने start किया तो I'll need minimum half an hour to complete it. So I'm going to stop today here and we'll meet again in the next session.